পুজো যদিও শেষ হয়ে গেছে, তবে পুজোর রেশ এখনও কাটেনি। এখনও মনে পড়ছে কলকাতায় কেমনভাবে প্রত্যেকটা দিন পুজোর খুব খুব আনন্দে, খুব খুব ব্যস্ততায় কাটলো। তো যেমন আমি বলেছিলাম যে অষ্টমীর ব্লগ আমি পরে দেব, তো হিয়ার ইট ইজ বেসিক্যালি. So as I was saying that although it has ended, Durga Pujo has ended, but still it's there in my mind, it's still there. I mean, I'm still in that hangover. So it was Ashtami morning. I got ready. Of course, wearing sari is mandatory on that day. Doing my makeup. After that, I just went out for giving my Pushpanjali. This time, any other family member couldn't join me because there was another puja at my home. So I had to go by my own only. So it was the one which I earlier said, that Parar Pujo, where I have given my Pushpanjali to Ma. So but I went there, then I came back, then I again changed my dress, as there was another puja at my home, so I got prepared for that. I couldn't wear sari for that because it was a bit uncomfortable. Not that, sari, I love sari, but at the same time I can't carry it, so yes, I changed. Here Ma is doing all the things, prepping the noibiddo, and I was clicking her, I was just recording her moments. And then Purohit Moshe arrived, and he did the rest. Of course mom did, by all alone, but rest the things which Purohit Moshe had to do, he had to do. Then this is the place where we kept our Thakur, our देवताओं का मंदिर जिसको बोलते हैं, तो we made that. So these are all the stuffs for puja. It was basically Narayan Puja with Yagya. So, and here I am. I was actually doing the Chandan thing. Chandan, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे. Anyway, Chandan बांटना कहते हैं बंगाली में. तो I was doing that. And but वो करते करते भी मैंने एक वीडियो ले ली खुद की. And here mom is cutting the fruits and all. And so it was a puja thing. Then Yagya started, and it was pretty good. Although I have a problem, I have very sensitive eyes. मतलब मैं कभी भी धूप में आँखें नहीं खुल के रख सकती हूँ. कभी भी मैं अगर ऐसा पूजा चल रहा है और जो हम लोग कहते हैं धुनो, तो at that point of time I just can't open my eyes. So मैं बहुत देर तक बैठने की कोशिश की. Then I had to leave the room, and मैं बाहर जाके बैठ गई थी. बट मेरा हालत ही ख़राब हो गई थी. बट हाँ, ये एक अलग फीलिंग है, एंड इतना प्यारा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ. यहाँ पे फिर पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने भोग खाए, जो माता नारायण जी को चढ़े थे. नॉट माता को, नारायण जी को. और एक्चुअली माता वाला भोग भी हमारे घर पे आया था, तो वो भी हमने खाए थे. तो ये नारायण जी वाला भोग है. तो ये खाने के बाद फिर ये जो आप देखोगे ना, ये वो ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर यज्ञ के टाइम पे पुरोहित जी लोग ऐसे सर पे बांधते हैं, तो वो सब करके ही स्टार्टेड विद दिस. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं.
कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो। It was part 1 Ashtami vlog. More is coming soon from the day. Stay tuned. Thank you for watching.